गुड मॉर्निंग. हाँ, थोड़ा सा मोठं कर दे. कसं? हो. त्याचा प्रॉब्लेम नाही आहे का? ठीक आहे, असू दे, बघू नंतर. लेट्स टॉक अबाउट the concept of trial balance, because what we have talked about till now is recording of transactions. We have talked about the posting of transactions from the journal to the ledger. We also talked about the ledger balancing, that how do you do the balancing of the different ledger accounts. Now, after doing the balancing of the ledger accounts, the next step that we need to do is we have to prepare a trial balance. So let's talk about what is this trial balance. A trial balance is basically a summary statement of all ledger account balances. जितने भी हमने लेजर में अकाउंट बनाए हैं उन सब के बैलेंसेस कैलकुलेट करने के बाद we prepare this as a summary statement which contains all those ledger balances, and therefore it will include what? It includes all real, nominal and personal accounts or all assets, liabilities, incomes, expenses एंड कैपिटल. जितने भी लेजर अकाउंट्स आपने बनाए थे दोज विल बी आइदर रिलेटेड टू रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स, जिनके बैलेंसेस विल डायरेक्टली अपीयर इन योर ट्रायल बैलेंस. और एल्स आई वुड से इट इंक्लूड्स all the incomes, all the expenses, all the assets, all the liabilities and the capital of the business at a single place. Now, what is the benefit of that? It proves the arithmetic accuracy of ledger account balances. Now, what does this mean? That it proves the ledger account balance accuracy. Understand and observe. जब मैं मेरे लेजर अकाउंट्स बना रहा था तो मैं किसी लेजर अकाउंट के डेबिट में इफेक्ट दे रहा था, किसी लेजर अकाउंट के क्रेडिट पे इफेक्ट दे रहा था. हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट देके ही मैं आगे बढ़ रहा था. नाउ व्हेन आई हैव प्रिपेयर्ड माय ट्रायल बैलेंस, जिन लेजर अकाउंट्स के डेबिट बैलेंसेस थे
वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आएंगे, और जिन लेजर अकाउंट्स के क्रेडिट में बैलेंस थे वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आएंगे। अब क्योंकि मैं डबल एंट्री फॉलो कर रहा था, तो टोटल ऑफ ऑल द डेबिट बैलेंसेस must be equal to the total of all the credit balances or not। हर ट्रांजैक्शन के अगर आप दो इफेक्ट दे रहे हो, एक डेबिट के साइड एक क्रेडिट के साइड, तो इसका मतलब ये बड़ा सिंपल है कि आपके टोटल जितने भी डेबिट्स थे वो आपके टोटल क्रेडिट्स को इक्वेट करने चाहिए या नहीं। और ये अल्टीमेटली हमको कहां से पता चलता है? फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। सर अगर डेबिट क्रेडिट से मैच नहीं हुआ तो in that case it simply indicates that either you have not given some of the effects either on the debit side or on the credit side, or you have given those effects wrong, and that's why we need to first prepare what? The trial balance, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमने हमारे बुक्स में सारे के सारे ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट जहां जहां जैसा जैसा देना चाहिए था वैसे इफेक्ट हमने दिए हैं या नहीं। राइट, एंड देन द लास्ट पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड्स all ledger balances to prepare what? The financial statements. To prepare the financial statements. So whatever financial statements that you want to prepare, may it be profit and loss account, may it be balance sheet, may it be income statement, उन सब स्टेटमेंट्स को, फाइनल अकाउंट्स को बनाने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसी के बैलेंसेस उठा के आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालते हो। राइट, नाउ अंडरस्टैंड द पॉइंट व्हाट आई सेड। I said it provides all the ledger account balances. तो अगर if I am preparing my trial balance, I am having two options. One, I can prepare it in this account form. Always remember that trial balance is a point statement. Why it is a point statement? Because it is prepared using the ledger balances of a particular point. It is a point statement. क्योंकि इमीडिएटली अगले पॉइंट पे, अगले दिन पे आपके बैलेंसेस चेंज हो सकते हैं या नहीं, इसीलिए लेजर ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? अ पॉइंट स्टेटमेंट. So when we prepare a trial balance, as I said, we can have two options. One, you prepare it in account form. मतलब क्या? जिसमें आपके पास आपके ट्रायल बैलेंस के दो साइड होते हैं, क्योंकि ये अकाउंट फॉर्म में बना रहे हैं. प्लीज अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस फॉर एवर, that a statement can be prepared in any of the format including account format, and that's why it is said a statement includes account, but an account does not include the statement. अगर किसी चीज के लिए आपको कोई एक अकाउंट बनाना है तो that will always be prepared in the format of account, but statement अगर किसी चीज के लिए बनानी है तो आप उसे अकाउंट फॉर्म में भी बना सकते हो, आप उसे वर्टिकल स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी बना सकते हो. सो द फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ दैट, इन द अकाउंट फॉर्मेट, इफ आई वांट टू प्रिपेयर, इट विल बी ट्रायल बैलेंस एज ऑन डॉट 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 डॉट. व्हाई आई यूज द वर्ड एज ऑन? बिकॉज ट्रायल बैलेंस इज अ
point statement. Particulars amount, particulars amount. जिन लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस डेबिट बैलेंसेस हैं, दोज ऑल विल अपीयर इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. मतलब जिस लेजर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आपने क्रेडिट साइड में लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ बैलेंस इज नथिंग बट डेबिट बैलेंस और नॉट, दोज बैलेंसेस विल कम इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. किन लेजर अकाउंट्स को डेबिट बैलेंस होता है? असेट्स and expenses normally have debit balance or not, or real, nominal या पर्सनल, किसी भी टाइप के अकाउंट को डेबिट बैलेंस हो सकता है ना. पर on the credit side will normally have the balances of incomes, liabilities and capital. क्रेडिट साइड में कभी भी रियल अकाउंट्स नहीं आते हैं, बिकॉज रियल अकाउंट्स विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंसेस. और इनको मैं यहीं इनके सामने लिख देता हूं. रियल, पर्सनल. assets can be real, assets can be personal, but liabilities, incomes, capital can never be real. Those will always be either nominal or personal accounts or not. Are you able to understand this point? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपके सारे एसेट्स और आपके एक्सपेंसेस को जनरली डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए वो ट्रायल बैलेंस के कौन से साइड में आएंगे? डेबिट साइड में. वहीं इनकम्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल्स, इनको जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है, एंड देयरफॉर दोज विल अपीयर इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. बट इफ देयर इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ प्रोप्राइटर, दैट ड्रॉइंग्स will appear on the debit side because it is reduction in the value of capital, and therefore drawings come on to the debit side. तो ये तो हो गई बात आपके ट्रायल बैलेंस की इन एन अकाउंट फॉर्मेट. अब इसी ट्रायल बैलेंस को हम लोग अगर स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करें तो it will be something like this: trial balance as on ... and then you have the entries in that something like this: serial number, particulars, debit amount, credit amount. In fact, there was this concept of gross trial balance and net trial balance. ये जो हम लोग बना रहे हैं फॉर्मेट्स, वो बना रहे हैं हम लोग नेट ट्रायल बैलेंस वाले. अब इन दोनों में फर्क क्या होता है वो बताता हूं. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस. तो हमने इसको दो पार्ट में बनाने के बजाय दो अमाउंट कॉलम बना दिए. जिस लेजर बैलेंस को डेबिट बैलेंस होगा उसका डेबिट कॉलम में बैलेंस लिखा जाएगा, और जिस लेजर अकाउंट को क्रेडिट में बैलेंस होगा
उसका क्रेडिट कॉलम में बैलेंस लिखा जाएगा। डेबिट बैलेंस मतलब क्लोजिंग कहां लिखते हैं हम लोग लेजर के? क्रेडिट साइड में, ये याद रखना। ऑलराइट, सो लेट्स से आई एम हैविंग असेट्स, आई एम हैविंग लाइबिलिटीज, आई एम हैविंग इनकम्स, आई एम हैविंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में सारे ही लेजर बैलेंस आने वाले हैं नहीं। एंड आई ऑल्सो हैव कैपिटल as well as drawings. Asset balances will come in the debit column. Liability balances will come in credit column. Income balances will come in credit column. Expense balance will come in debit column, whereas capital will come on the credit and drawings will come on the debit. And whatever is the total of this trial balance, whether it is prepared in an account form or in a statement form, this total must be equal. This total must remain same. इसलिए same. Did you get that? Clear सबके लिए? अब we had prepared certain journal entries. हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं जर्नल एंट्रीज की हम लोग अब लेजर पोस्टिंग करेंगे। जो हमने संडे के दिन जर्नल एंट्रीज की थी, एक प्रॉब्लम उठा के उन्हीं जर्नल एंट्रीज की हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे, और लेजर पोस्टिंग करने के बाद उन लेजर्स के बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे, और उन बैलेंसेस के बेसिस पे विल प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। इज इट पॉइंट राइट? Let me come to that journal entries. इधर ही किया था क्या मैंने? नहीं, जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन अलग किया था ना, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना हमने। ग्रुप पे शेयर किया था मैंने। बेसिक अकाउंट जो तूने लिखा है ना कुशल, उसको अप्रैल 23 नाम दे, क्योंकि बेसिक अकाउंट की अब तक के मेरी 22 बैचेस हो गई है। आई विल कम टू क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3 करें या 4? ट्रिकी एंट्रीज किस में थी? 4 में थी ना। 7 तो तुमने बाद में सॉल्व किया ना। चलो एक काम करते हैं, फिर 7th ही करते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज भी डिस्कस करते हैं, एंड साथ ही साथ विल गो अहेड विथ द डिस्कशन ऑफ लेजर पोस्टिंग एज वेल। लेट मी जस्ट पुट फोर्थ द लेजर्स। एक 15-20 लेजर बना लेते हैं पहले अपन। Okay. The very first entry in that was Mr. Sancheti received 50,000 from his uncle as a gift.
and deposited the same into the business Bank of India account. Means Sancheti is bringing that amount in the form of capital or not? You should pass the entry for that as what? Bank of India account debit to Sancheti's capital. तो कौन से दो अकाउंट आएंगे उसमें? We are talking about question number 7. बैंक ऑफ इंडिया, ये पहला अकाउंट आएगा आपके पास. क्या एंट्री होगी? 2018 October 1st to Sancheti's capital rupees 50,000, and at the same time it will also go to what? Sancheti's capital. On the credit side, 2018 October 1st by boy, Bank of India, boy. How much? 50,000. Correct? Purchase goods of rupees 15,000 from Mahesh. What is the journal entry that you have written? Purchase account debit to Mahesh account. Correct? तो कौन से दो अकाउंट आएंगे? परचेस अकाउंट, इसके डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? 2018 अक्टूबर 3rd, क्योंकि सेकंड को तो ड्राई डे था ना, सॉरी वो गांधी जयंती थी ना. टू महेश 15,000, and at the same time we also need what? Mahesh account on to the credit side. What? 2018 October 3rd by purchase rupees 15,000. Am I right? फिर लिखा है sold goods on credit to Suman. Entry Suman account debit to sales account. So the accounts that you need is Suman account on to the debit side. क्या लिखोगे? 2018 October 5th to sales. Am I going right? As 18,000. है ना? And at the same time we will also prepare what? सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग? 2018 अक्टूबर 5th बाय सुमन $18,000. Yes or no? Goods of rupees 600 being defective returned by Suman. It's a kind of sales return or not? जर्नल एंट्री क्या लिखी आपने? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुमन अकाउंट. तो कौन से अकाउंट? पहला सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में 2018 अक्टूबर 7th टू सुमन. कितने के गुड्स वापस भेजे उसने? 600. And at the same time we should go to Suman account on to the credit side 2018 October 7 by sales return. Are you able to get it? कितने के गुड्स वापस आए? 600. Am I going good? Remitted cash to Mahesh 14,800 and received 200 का डिस्काउंट. महेश को हमने 14,800 भेजे, 200 रुपए का डिस्काउंट मिला. जर्नल एंट्री विल बी महेश अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट 14,800 टू डिस्काउंट अकाउंट 200. है ना? सो
Mahesh account on to the debit side 2018 October 11 to cash 14,800 to discount received 200. यस और नो? तो इसके लिए हमारे पास अकाउंट और कौन कौन से होने चाहिए? कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. महेश अकाउंट में ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग. कैश अकाउंट के कौन से साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में. अक्टूबर 11 बाय महेश. कितना पे किया महेश को? 14,800. है ना? एंड एट द सेम टाइम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के कौन से साइड में आएगा? क्रेडिट साइड. क्या लिखोगे? बाय महेश एज 200. bought machinery from KK and company 30,000 and half of the amount paid immediately. KK and company से आपने एक मशीनरी खरीदी. ये पहला ट्रांजैक्शन. उसके लिए आपकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू KK एंड कंपनी, और फिर उसको आपने हाफ ऑफ द अमाउंट पे कर दी. उसके लिए एंट्री होगी KK एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बराबर है नहीं? पहला एंट्री यू परचेज द मशीन, यू विल पास द एंट्री इज व्हाट? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू KK एंड कंपनी, टोटल 30,000. और फिर आपने उसको हाफ ऑफ द अमाउंट पे कर दी. उसके लिए एंट्री करोगे KK एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000. यहीं अगर हमने कंपाउंड जर्नल एंट्री लिखी होती, यहीं अगर हमने कंपाउंड जर्नल एंट्री लिखी होती, पहली एंट्री क्या करूंगा मैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट 30,000 टू KK 30,000. ये फर्स्ट पार्ट. और क्योंकि आधे पैसे दे दिए तो यू विल पास द एंट्री एज KK अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश 15,000. या फिर इसका दूसरा अल्टरनेट क्या है मेरे पास? वो ऐसे, मशीनरी अकाउंट डेबिट 30,000, क्योंकि मशीन तो 30,000 की आई, टू कैश 15,000 टू KK 15,000. Did you people get it? जब कभी भी हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री लिखते हैं तो उसकी पोस्टिंग कैसे होगी? ऑब्जर्व इट. विल प्रिपेयर व्हाट अकाउंट्स? मशीनरी अकाउंट एंड ऑल्सो KK एंड कंपनी. मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में क्या जाएगा? 2018 अक्टूबर 15 क्या? टू कैश 15,000 एंड टू KK एंड कंपनी 15,000. आर यू एबल टू गेट इट? उसी तरह से KK एंड कंपनी के क्रेडिट साइड में क्या जाएगा? 2018 अक्टूबर 15 बाय मशीनरी, but only rupees 15,000. Are you able to get it? सर पर KK को तो 30,000 रुपए देने बाकी थे, आधे दे दिए ना, तो उसका हमने डायरेक्ट एंट्री कर दिया. ऑलराइट. या फिर दूसरा ऑप्शन क्या था? मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में टू KK एंड कंपनी 30,000, KK एंड कंपनी के क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी 30,000, फिर KK एंड कंपनी के डेबिट साइड में टू कैश 15,000 और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय KK एंड कंपनी 15,000. अल्टीमेट इफेक्ट वही है नहीं, है ना? सो कैश अकाउंट ऑन टू द क्रेडिट साइड अक्टूबर 15 बाय मशीनरी एज रुपीज 15,000
गेटिंग इट राइट? आगे क्या हुआ? पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ टू मशीनरी ₹400. Logically speaking, or I would say technically speaking, whenever you are incurring an expense to make an asset ready to use is considered as capital expenditure. तो यहां जो रिपेयर्स के लिए खर्च दिया हुआ है, क्योंकि जब मशीन खरीदी तभी दिया हुआ है, तो वी हैव टू अज्यूम इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ मशीनरी. यही अगर कोई एग्जिस्टिंग मशीनरी होती और उसके लिए खर्च करते तो इट वुड हैव गॉन टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस. राइट? राइट डाउन एन अमाउंट स्पेंट to make an asset ready to use is a capital expense, comma, and added to the cost of respective asset. क्लियर है? सो अब हमको क्या करना पड़ेगा? अक्टूबर 17 मशीनरी अकाउंट में टू कैश. हम लोग रिपेयर्स को डेबिट नहीं करेंगे. किसको डेबिट करेंगे? मशीनरी 400. लॉजिक समझ में आया? क्योंकि ये मशीन खरीदते समय खर्च किया हुआ है, इसीलिए इट इज कंसीडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड देयरफॉर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट. एंड एट द सेम टाइम इन द कैश अकाउंट ऑन टू द क्रेडिट साइड बाय मशीनरी ₹400. Of course, machinery account debit to cash account being the repair cost incurred for installation of machine. Next, purchased a horse for ₹4,800, carriage charges 200. Same concept. आपने घोड़ा खरीदा, घोड़े के ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी दिए. अब घोड़ा खरीदने के बाद ट्रांसपोर्ट क्यों दिया? घोड़े पे बैठ के आते थे ना. सॉरी, कहां लिखा हुआ है? Horse is also the part and parcel of your business assets. Livestock, horse, cats, dogs, if you purchase for your business purpose, those are considered as livestock. Right? जैसे कोई पोल्ट्री होती है, पोल्ट्री ओन द हेन्स, राइट? कोंबड्या. Those hens are their asset. Those are called as livestock. In all animals put together, livestock. Like if you take the example of Serum Institute, इनका वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग होता है एंटी रेबीज के लिए, and that is made out of the bone marrow of horses. So for them, horses become asset and therefore the horse account will be considered as livestock account. Right? या फिर कहीं आप कोई सिक्योरिटी की कंपनी है, if they are owning the dogs, the sniffer dogs, in that case the dogs will become their assets and those will be called as livestock. Correct. So you'll prepare the account as what? Livestock. On to the debit side, 2018 October 20 to cash full 5,000
Because even carriage paid for transportation of horse is to make the asset ready to use or not. घोड़ा तुम तक पहुंचेगा तब ना जब जाके तुम टपक टपक करोगे ना, राइट? टपक टपक नहीं, वो क्या होता है? तगड़क 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 तगड़क. And at the same time in my cash account onto the credit side, buy livestock. तगड़क तगड़क तगड़क. 5,000. Are you able to understand this? Withdrawn from bank for personal use 5,000. ड्रॉइंग्स किया आपने, पर वो कहां से किए? बैंक से. सो व्हाट विल बी द एंट्री? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बॉय अकाउंट. सो द नेक्स्ट अकाउंट दैट वी नीड इज being the horse purchased and transportation paid. Debit side 2018 October 25 to Bank of India. कितना? 5,000. And at the same time it will go to what? Bank of India account onto the credit side. है ना? 2018 October 20 by drawings. Rupees 5,000. Am I right? Next. Amount due from Girish 900 is proved to be irrecoverable and has been written off as bad debt. अब गिरीश नाम का कोई कस्टमर था आपका, जिससे आपको 900 रुपए आने बाकी थे. अब वो 900 नहीं आएंगे. So that becomes your loss on account of bad debt. You'll pass the entry for that as what? Bad debts account debit to Girish account. So I need the accounts as what? कैसा है? यहां ऐसा होगा कि कुछ अकाउंट्स के बैलेंसेस आपके उल्टे साइड में आएंगे, नॉर्मली जो आने चाहिए उसके कंपैरिजन में. हाल फिलहाल चला लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं, राइट? बैड डेट्स अकाउंट on to the debit side. 2018 October 27 to Girish rupees 900. और अब लॉजिकली क्या होना चाहिए? गिरीश से पैसा रिसीवेबल है ऐसा उसके अकाउंट में दिखना चाहिए, पर आप डायरेक्टली जर्नल एंट्री कर रहे हो तो आपको वो बैलेंस रिसीवेबल है वो दिखेगा ही नहीं, right? On to the credit side 2018 October 27 रिसीवेबल होगा तब ने जाके बैड डेट होगा. yes or no? But for now you have to accept it for now. Next, paid for sales vouchers 1100. What is this sales voucher? इट्स अ काइंड ऑफ स्टेशनरी. आपने सेल्स वाउचर छपवा के लिए या सेल्स वाउचर खरीद लिए, तो यू हैव पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. हाउ मच? 1100. सो व्हाट विल बी द अकाउंट दैट विल नीड फॉर दिस? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज अ जनरल अकाउंट दैट वी प्रिपेयर. On to the debit side will write 2018 October 29 to cash 1100. लॉजिकली देखा जाए तो कैश अकाउंट को कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है, पर इसमें सारे के सारे इफेक्ट आपने क्रेडिट में दिए, इसीलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्योंकि आपके पास ओपनिंग कैश कितना था वो पता ही नहीं है, राइट? In my cash account on to the credit side by stationery or by printing and stationery, I'm sorry,
Printing and stationery 1100. And the last one, paid insurance premium 6000. Understand and observe. Insurance premium can be paid for the business assets. Insurance premium can be paid for the personal life of the proprietor as well. If it is provided within the business, unless otherwise provided, assume it to be a business expense. And if it is a business expense, you will debit the insurance premium account. And generally, the insurance premium is not paid in cash. Insurance premium has to be paid through bank only. So, I will pass the entry as what? Insurance premium account debit to Bank of India account. Assuming it is paid through the bank. Insurance premium debit side 2018. ये दरवाजा लगा दे, लॉक कर दे उसको. October 31st to वो उसको, हाँ गुड, to Bank of India. I am assuming it in the question, it is being given as a reference of paid by cash. हालांकि ये कैश में पे नहीं हुआ है. इंश्योरेंस प्रीमियम ये कैश में पे नहीं होता है. 6000, and at the same time in my Bank of India account, I'll write what? Yes, October 31 as by insurance premium. Bank only. Insurance premium is never paid by cash. Insurance premiums are always paid through banks. Alright? अब हमें क्या करना पड़ेगा? सारे लेजर अकाउंट के पहले बैलेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे. किसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखा मतलब डेबिट बैलेंस. किसी अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस लिखा मतलब क्रेडिट बैलेंस. कैश अकाउंट इज योर असेट. टेक्निकली इसको डेबिट बैलेंस होना चाहिए, है ना? पर इस क्वेश्चन में क्योंकि सारे अमाउंट्स पेड 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 दिखाए हैं, इसलिए कोई पौधा बचा ही नहीं. वेल सॉरी, इसीलिए कैश अकाउंट विल हैव द क्रेडिट बैलेंस इन दिस, जो नॉर्मली नहीं होता है. ओनली फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन विल गिव द इफेक्ट्स एज दोज आर बीन गिवन टू अस. राइट? चलो, सो October 31st ऑन टू द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरीड डाउन in bank is 39,000. Yes or no? कैसे? Debit is 50, credit is 11, so there is a balance of 39,000 or not? Sanchit is capital, debit side 2018, October 31st टू बैलेंस कैरीड डाउन. क्यों मैं डेबिट साइड में लिख रहा हूं? क्योंकि क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, और देयर इज नथिंग इन डेबिट, आई वुड से. करेक्ट? व्हाई एम आई पुटिंग बॉक्स ऑन दैट? टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द गिवन अकाउंट. ऑलराइट? परचेज अकाउंट क्रेडिट साइड 2018 October 31st. मैं October 31st क्यों यूज कर रहा हूं? Because I am doing the balancing after all the transactions for the given month. By balance carried down as 15,000. हालांकि मैं फाइनल अमाउंट्स की टोटल नहीं लिख रहा हूं, बट वी शुड लॉजिकली राइट द टोटल्स ऑल्सो. Alright? Mahesh account, debit and credit is equal, so there is no balance in his account.
सुमन अकाउंट डेबिट इज 18,000 बट क्रेडिट इज 600, मतलब there is a balance or not? So by balance carried down as 17,400. Am I going good? Sales account 2018 October 31st. To balance carried down 18,000. है ना? Sales return account debit side, credit side 2018 October 31st as what? By balance carried down 600. Are you able to understand this? Cash account debit side 2011 18 11 कहाँ से आ गया? October 31st to balance carried down. ये गलत लिख रहा हूं पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं, ऐसा नहीं होता है. 15 15 30 200 35 200 36 300. Is it right? Cash account can never have the credit balance. ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है. Discount received debit side 2018 October 31st to balance carried down 200. Are you able to get it? Machinery account credit side 2018 October 31st by balance carried down 30,400. Yes or no? KK and Company account debit side 2018 October 31st to balance carried down as 15,000, क्योंकि केके को अभी भी पैसा देना बाकी है. Are you able to get it? Livestock account credit side 2018 October 31st by balance carried down as 5,000. है ना? Drawings account credit side 2018 October 31st by balance carried down rupees 5,000. Yes or no? Bad debts account credit side 2018 October 31st by balance carried down 900. है ना? जहां तक बात है गिरीश के अकाउंट की, यहां डेबिट बैलेंस पहले से होना चाहिए था, ओपनिंग बैलेंस, तब जाके वो बैड डेट होता, पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस की इंफॉर्मेशन नहीं है. सो वी आर सिंपली पुटिंग द बैलेंसेस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. अगेन गिरीश के अकाउंट में भी ये गलत है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं. टू बैलेंस कैरीड डाउन 900. Yes or no? Printing and stationery account credit side 2018 October 31st by balance carried down as 1100. Brought down is opening, carried down is closing,
And finally, insurance premium account, debit side, 2018, October 31st, by balance carried down as 6,000. Did you people get it? So this is what we have done, is only calculation of balances. We did ledger posting and balancing. Still we have to prepare the trial balance. That thing we'll be doing in tomorrow's lecture. नहीं, हर एक दिन के लिए नहीं. On a given date, that is generally year end. ईयर एंड पे करते हैं ना हम लोग. ये बैलेंसेस हमने हमारी जानकारी, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए हैं. हालांकि एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंसिंग होता है. राइट? So that's it for the day. We'll be meeting tomorrow. Thank you.